Getting data from a cell located in a different sheet called, which option have right answer? Getting data from a cell that is located in different sheet, এটা কহিব cell referencing, option B ହେବ ଏହାର right answer. Cell referencing মনে ରଖନ୍ତୁ, ঠিক ଅଛି, cell referencing କୁହାଯିବ ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର, relative, absolute and mixed referencing କୁହାଯାଏ. Next, which of the following keyboard shortcut can be used for creating a chart from the selected cells? Selected cells को नेकी आपण एक चार्ट क्रिएट करिवे. कोन क्रिएट करिवे? चार्ट. सेति F11 function 11 को आपण यूज करि परिवे. F11 की हेबो यार राइट आंसर. Which function is used to calculate the total number of characters in a cell? Total number of characters in a cell को आपण जेते बेले कैलकुलेट करिया पई चाहंती सेति पई len function को यूज करंती. Option A, len function is your right answer. Next, any change in Excel worksheet data can be shared with Word document by. It means simply जदि बुझिबा Excel sheet रो data को Word document रे शेयर करा जिवो. सेति पई option A रे कहै जाउची inserting an Excel file into Word, that is also आपनकर शेयर हबो. Linking copied Excel data to Word document, तो एटा मध्ये होई परिबो. Copying and pasting Excel worksheet into Word document, copy and paste रे जरिया रे also करा जाई परिबो, means all of the above. All the above is your right answer. Option D हेबो यार right answer. Okay. Next, example of non-numerical data is कहंतु. Data कोन? Data होची collection of unprocessed items. और कहै जाय data होची that is raw fact and figure को data कहबो. ताले ई data टा होची non numerical, माने कोन? Numbers आसीबो नाही. देखंतु examination score रे number आसे and bank balance रे also number आसे आपन, किंतु employee address रे कोनोसी numericals आसीबो नाही. That's why option A हेबो right answer. But non numerical data होई परिबो. Next, a bootstrap is a bootstrap गोटे कोन कहंतु? Bootstrap. Bootstrap होची आपनकर option C, गोटे small initialization program अटे to start up a computer, जहा गोटे कंप्यूटर को रन कराए. ठीक अछि. boot मन रखंतु कंप्यूटर जेते बेले आपनकर ऑन हुए माने रन हुए सेही प्रोसेस को बूट और बूटिंग कहै जाय. एवं बूटिंग दुई प्रकार वार्म एंड कोल्ड बूटिंग. ओके. नेक्स्ट, the key will launch the start button कहंतु. क्यों की start button को लॉन्च करिवो? That is windows की कहै जाय. कोन कहै जाय? Windows की. Option C is your right answer. Next, in a ledger printer the dash transfers the image to the paper. क्यों प्रिंटर कथा कहै जाउछि? That is ledger printer रे निम्नोक्त मध्यरु केउटा ट्रांसफर करूछि इमेज को टू द पेपर रे. ओके. ledger printer रे ड्रॉप कोन करिवो? ट्रांसफर करिवो इमेज टू द पेपर. Option D is your right answer. Next, data that is copied from an application is stored in the data that is copied हबो माने जो डाटा टा कॉपी हेबो until paste, जो पर्यंत सेटा पेस्ट होई नाही, that is clipboard रे स्टोर हेकी रहइबो. clipboard मन रखो. clipboard रे until paste स्टोर हेकी रहइबो. Which of the following programs compress large file into a smaller file? निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रोग्राम्स कोन करिवो? कंप्रेस करिवो गोटे लार्ज फाइल को स्मॉलर फाइल रे, that is WinZip. WinZip is your right answer. Option A एबो हेरो right answer. Next, recently deleted files are stored in. Recently deleted files recycle bin रे स्टोर हेकी रहे. recycle bin मन रखु. ओके. एंड जदि आपण सेटा को परमानेंट डिलीट करिसंती लाइक शिफ्ट सहित डिलीट को जदि आपण प्रेस करिवे, that is permanent delete, then सेटा recycle bin रे स्टोर हेबो नाही. Using Microsoft Words find and replace feature, you can do find and replace feature जरिया रे आपण कोन करि परिबे? find and replace feature जरिया रे आपण रिप्लेस करि परिबे both text and formatting. Option A, both text and formatting को आपण कोन करि परिबे? रिप्लेस करि परिबे. Next, press which key to select different portions of any text by dragging the mouse. ड्रैग करिबा ई शब्दटा मन रखंतु. आपण ड्रैग करिबा पई ऑलवेज कंट्रोल की रो सहायता नियंती. कंट्रोल की जरिया रे आपण ड्रैग करि परिबे. नेक्स्ट, ए मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट इनटू द डॉक्यूमेंट. आपण प्रिंट बाहर करिबा पूर्वरु आपण कोन चेक करंती? टू सेव द डॉक्यूमेंट, दैट इज नॉट इंपोर्टेंट, बट टू सेट पेपर सेटिंग. ओके. आपण जो पेपर रे प्रिंट बाहर करिवे तार सेटिंग को देखिबे एंड सी प्रिंट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, जाको प्रिंट प्रीव्यू कहै जाय. मींस बोथ बी एंड सी हेबो हेरो राइट आंसर. Option D is your right answer. What counts future कोन हबो कोन? What counts future, which option is your right answer? Option D, all the above is your right answer.
ओके वर्ड काउंट फ्यूचर रे आपण जहाँ भी आपनकर नंबर ऑफ वर्ड्स रही तार इनफॉरमेशन पाइबे ऑप्शन बी कुछ यूजफुल व्हेन द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट इज लिमिटेड टू सम नंबर ऑफ वर्ड्स एंड डिस्प्ले करिवो द नंबर ऑफ पेजेस देन आपनकर कैरेक्टर्स पैराग्राफ्स एंड लाइन इन द डॉक्यूमेंट सो हम ऑप्शन डी चूज करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इट इज ए मार्क नॉर्मली राउंड और स्क्वायर डॉट इट इज कॉल्ड कोन इट इज ए गोटे मार्क अटे जोटा आपनकर राउंड किमा स्क्वायर रो गोटे डॉट अटे तो सेटा कोन कहजो सेटा कहजे बुलेट ऑप्शन बी बुलेट हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कहजो फाइंड एंड रिप्लेस रो डायलॉग बॉक्स को ओपन करबा पई केउ शॉर्टकट की को यूज करा जाय कंट्रोल प्लस इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपनकर परीक्षा रे एमिति प्रश्न आसी पारे मन रखंतु शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हबो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट करबा सबस्क्रिप्ट मींस सेमिति मु लेखि देखंतु x2 ओके दैट इज सबस्क्रिप्ट a2 दैट इज आल्सो सबस्क्रिप्ट तो एमिति गोटे फॉर्मेट रे आपण रखिबा पई कंट्रोल प्लस इक्वल साइन को शॉर्टकट की जरिया रे सबस्क्रिप्ट करि परिबे नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इज गोटे सेल रे थिबा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होची देखंतु सेल रे आपनकर नंबर आसी परिबो एंड टेक्स्ट आसी परिबो तो एथिरे जहां भी टेक्स्ट रहिछि दैट इज लेफ्ट रे रहइबो एंड नंबर राइट रे रहइबो तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रॉम व्हिच टूलबार वी कैन चेंज चार्ट टाइप चार्ट टूलबार ओके इजी क्वेश्चन चार्ट टूलबार को ठीक है आपण तार कोन करि परिबे चेंज करि परिबे चार्ट रो टाइप को आपण केउ चार्ट रखिबे पाई चार्ट बार चार्ट ओके और जे कोन से आपण चार्ट रे रखिया पई चाहती दैट इज आपण चार्ट टूलबार को नहीं चेंज करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करंतु ए यूजर wish to rename a spreadsheet from a workbook which is the correct sequence of events that he would do for this okay प्रश्न कोन कहूची जने यूजर चाहूची रीनेम करेबो कोन से को स्प्रेडशीट को सिंपली बुझो रीनेम करेबो का कोन से को स्प्रेडशीट फ्रॉम ए वर्कबुक which is the correct sequence रीनेम करेबा पे कोन करा जाई परिबो प्रथमे आपण राइट क्लिक करिवे on the spreadsheet tab then select rename so option C है यार राइट आंसर नेक्स्ट WYSIWYG stands for okay यार फुल फॉर्म कोन हो WYSIWYG it means that is what you see is what you get option A है राइट आंसर मन रखंतु that is the full form next an output device is output device कोन हे परिबो always कोन करे process information from a computer into a form the human can understand option A कहि परिबा आउटपुट डिवाइस कोन करे सिंपली जदि हमें कहबा आउटपुट डिवाइस रो काम होची आपन को गोटे जने यूजर को कोन दबो से आउटपुट प्रोवाइड करिवो डाटा प्रोसेस होबा परे जो इंफॉर्मेशन यूजर बुझी पारे दैट इज आउटपुट क्लियरली बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करंतु व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एक्स आफ्टर सिलेक्टिंग सम सेल्स इन एक्सेल जते बेला आपण कंट्रोल एक्स को प्रेस करिवे ताले कोन होबो कोनतु जते आपण कंट्रोल एक्स को प्रेस करिवे कोन होबो व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एक्स कोन हिजबो व्हिच ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन ए है राइट आंसर द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल डिसअपियर फ्रॉम द सेल एंड गेट स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड ओके ऑप्शन ए है राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन a single column which of the following describe how to select all the cells in a single column रे आपण सेल को सिलेक्ट करिवे all the cell को सेति भाई लेफ्ट क्लिक ऑन द गोटे ग्रे कॉलम टाइटल बटन को दिबे ऑप्शन सी हबो राइट आंसर ओके ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड स्मार्टफोन्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड हैंडल्ड कंप्यूटर इज योर राइट आंसर ऑप्शन ए हबो योर राइट आंसर नेक्स्ट if you need to edit header and footer मान होची गोटे डॉक्यूमेंट रो बा गोटे पेज रो टॉप रे थिबा मार्जिन को हेडर को जाय एवं बॉटम रो थिबा मार्जिन को फुटर को जाय ताले हेडर एंड फुटर को एडिट करबा पई ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रो 2007 वर्जन और ऑनवर्ड्स किबा ताठारु नेक्स्ट वर्जन जाबि रहिछि व्हिच मेन्यू टैब शुड यू एक्सेस ताले देखो तू आपण इंसर्ट टैब को जाई कि हेडर एंड फुटर ऑप्शन को एडिट करि परिबे ऑप्शन ए है राइट आंसर व्हिच इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर सेविंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट in MS Word 2007 or above जे कोनोसी भी गोटे वर्ड डॉक्यूमेंट रो डिफरेंट इट कोन कहै छै डिफॉल्ट फॉर्मेट कहै छै तो डिफॉल्ट फॉर्मेट पई docx यूज करा जाय दैट इज फाइल एक्सटेंशन जाको कहै छै docx है यार राइट आंसर
फाइंड एंड रिप्लेस यूटिलिटी इज अवेलेबल फाइंड एंड रिप्लेस आपनकर वर्ड रे अवेलेबल रही एक्सेल रे रही एंड पावर पॉइंट रे रही मींस ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी है योर राइट आंसर मन रखंतु ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द फार्मूला फॉर एडिंग सेल A1 एंड A2 इन एमएस एक्सेल आपण A1 सेल को एवं A2 सेल को कोन करिवे ऐड करिवे सिंपली देखंतु इक्वल सहित A1 plus A2 रो रेंज सुनेबे इज ऐड हबो which command will you choose to convert a column of data into rows in MS Excel it means कोन से को कॉलम रो डाटा को आपण रो रे रखिया पई सेति पई एडिट जिबे देन पेस्ट स्पेशल देन ट्रांसपोज करेबे ट्रांसपोज करले आपण जहां भी कॉलम रो डाटा रो रे आसीबो to select one hyperlink after another during a slide presentation what do you press देखंतु एठी कहला हाइपरलिंक तो जानि कंट्रोल के हाइपरलिंक हबो बट आपण हाइपरलिंक को सिलेक्ट करछंती वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर माने कोन आपण दुईटा स्लाइड और दुईटा टैब जहां भी ओपन हबो देन आपण व्हाट डू यू प्रेस देन यहाँ पर आपण टैब की प्रेस करि परिबे ऑप्शन ए टैब हबो यार राइट आंसर यप नेक्स्ट सिबा व्हिच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए पावर पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट न्यू स्लाइड माने कंट्रोल एन हबो नाही ऑप्शन बी हबो राइट आंसर न्यू स्लाइड को कंट्रोल एम जरिया रे इंसर्ट करा जाय नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रथमे कोन आसीबो प्रथमे आसीबो आपनकर किलोबाइट देन यहाँ पर मेगाबाइट देन बाइट देन बिट मींस बिट होची डाटा रो स्मॉलेस्ट यूनिट देन यहाँ पर बाइट आसीबो देन मेगाबाइट आसीबो देन किलोबाइट ओके तो एमिति हबो आपनकर राइट आंसर क्लियर बिट बिट किलोबाइट मेगाबाइट नो एटा भी भूल अछि आपनकर प्रथमे आसीबो कोन ऑप्शन बी आल्सो भूल अछि प्रथमे आसीबो बिट हम जानि चंदी प्रथमे बिट आसीबो देन यहाँ पर आसीबो कोन बाइट बाइट पर आसीबो आपनकर किलोबाइट यहाँ पर आसीबो आपनकर मेगाबाइट ओके एटा हबो सीक्वेंस प्रथमे मेगाबाइट बिट पर जिगाबाइट आसीबोनी फॉलोइंग करेक्ट बीट पर किलोबाइट मेगाबाइट देन बाइट एटा नन ऑफ दिस आवर राइट आंसर ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर ओके बिकॉज़ प्रथमे बीट आसीबो देन बाइट आसीबो देन किलोबाइट देन मेगाबाइट देन आपनकर जिगाबाइट देन आपनकर टेराबाइट एमिति थाए सीक्वेंस टी सो नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर ओके और के ऑप्शन ठीक अछि कि नाही सीक्वेंस अनुसार जदि हम देखिबा नाही so none of these is your right answer next question number 35 देखंतु the term QWERTY keyboard means the keyboard layout of dash alphabetic characters first 6 alphabetic characters found on the top row of keys displaying letters option A हबो यार right answer okay QWERTY एटा कोन कीबोर्ड थिबा प्रथम 6 टी लेटर अटे next which of the following can be used to animate how the presentation moves from one slide to next गोटिए स्लाइड रु नेक्स्ट स्लाइड को जते बेले गोटे प्रेजेंटेशन गोटे स्लाइड मूव करूची जहा इफेक्ट आसीबो सेति पई ट्रांजिशन को यूज करते ट्रांजिशन से हो यार राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट प्रोसेस शुड बी यूज्ड टू रिकॉल ए डॉक्यूमेंट सेव प्रीवियसली इट मींस कोन आपण ऑलरेडी सेव करछन सेटा ओपन करि परिबे ऑप्शन सी हमर राइट आंसर ओपन वी कैन से नेक्स्ट द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज सिस्टम यूनिट रे थिबा मेन सर्किट बोर्ड को कहा जाय मदरबोर्ड और एटा पीसीबी मध्ये कहा जाय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मध्ये कहि परिबा नेक्स्ट ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लूटूथ कोन गोटे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क गोटे ऑप्शन ए हमर राइट आंसर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट if a new device is attached to a computer such as printer or scanner its dash must be installed before the device can be used अपन को यार ड्राइवर को इंस्टॉल करियार अछि प्रिंटर स्कैनर रो सो दैट अपन हार्डवेयर को एक्सेस करि परिबे हार्डवेयर डिवाइस को यूज करि परिबे यू मस्ट इंस्टॉल द ड्राइवर फर्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए यंग फोल्ड माउंटेन देखंतु निम्नतम मध्यरु केउटा एक यंग फोल्ड माउंटेन हेबो व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर यंग फोल्ड माउंटेन ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर हिमालय सेउचे एक हिमालय पर्वत हेउचे एक कोन यंग फोल्ड माउंटेन अटे क्लियर ऑप्शन ए समस्त चूज करछन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 मसिया रो जो विद्रोह होइतिला 1857 मसिया रे जो विद्रोह होइतिला सी समय रे गवर्नर जनरल के थिले भारतर गवर्नर जनरल के थिले लॉर्ड केनिन यहां पर से फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हले ठीक अछि ऑप्शन 3 हबो यार राइट आंसर 1857 मसिया रो विद्रोह समय रे गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड केनिन समस्त चूज करछथि ऑप्शन 3 ओके देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया हले लॉर्ड केनिन एंड 1857 मसिया रो विद्रोहटा थिला फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार थिला ठीक अछि प्रथम स्वाधीनता संग्राम थिला नेक्स्ट
Atacama Desert is located in which of the following countries? Try करंतु. Atacama Desert आपनकर निम्नलिखित मध्यरु केउ कंट्री रे रहिछि Atacama Desert? Atacama Desert रहिछि साउथ अमेरिका. ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर. समस्त चूज करछन्ती साउथ अमेरिका. ओके साउथ अमेरिका मन Atacama Desert रहिछि. ओके नेक्स्ट बा. When was the securities transaction tax introduced in India? Try करंतु. STT जाउ काजिबो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को भारत रे केउ मसिया रे इंट्रोड्यूस करा दैतिला 2004 मसिया रे. आई थिंक सही समय रे पी चिदंबरम थिले अर्थमंत्री. ओके कोन ए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सिंपली मन रखंतु इन्वेस्ट करबा मींस कोनसी शेयर म्यूचुअल फंड रे जते बेले आपण इन्वेस्ट करछन्ती देन गोटे ऑटोमेटिक गोटे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपनकर कटिबो फॉर सिक्योरिटी पर्पस रे. ओके दैट इज होजे आपनकर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इंट्रोड्यूस करा दैतिला 2004 मसिया रे. नेक्स्ट इन जनवरी 1804 मसिया रे मेजर ब्राउटन ठीक अछि ब्राउटन कनकोर्ड संबलपुर को से कोन करथिले अख्तियार करथिले बाय डिफीटिंग व्हिच मराठा गवर्नर. ओके केउ मराठा गवर्नर को परास्त करी संबलपुर को अख्तियार करथिले तांगा अधीन को निथिले ये मेजर ब्राउटन. ओके देन कोन व्हिच मराठा गवर्नर? ऑप्शन ए होइछ राइट आंसर ताटिया फर्नाविस. ठीक अछि ताटिया फर्नाविस गवर्नर को से परास्त करथिले एवं संबलपुर को तांका अधीन को निथिले 1804 मसिया रे. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इन इंडिया हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द MICR कोड? MICR कोड MICR कोड रे केतोटी डिजिट रहिछ? MICR कोड कोन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रो गोटे कोड जहा आपण चेक को कोन करंती रीड करबो तार बैंक कोन तार ब्रांच कोन दैट इज सबुडा को से कोड द्वारा माने रीड करिया पई एथिरे मुख्यतः 9 टी कैरेक्टर को और 9 टी डिजिट को एथिरे यूज करा जाय. 9 टी डिजिट मन रखंतु. नेक्स्ट the northern part of the eastern coastal plain of India is known as the northern part of the eastern coastal plain of India is known as northern part of the eastern coastal plain को कहजिबो northern sircar is your right answer. Okay northern sircar क्लियर. सेमिति आपनकर करमंडल रहिछि करमंडलटा आपनकर आसीबो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अंचलटा आसीबो. ओके एंड मालाबार आसीबो सेपटे मालाबारटा आसीबो आपनकर केरल पटे आई थिंक. ओके ऑप्शन ए नॉर्दर्न सिरकार इज योर राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्क्राइब्ड बाय ग्रानविल ऑस्टिन एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट मींस ग्रानविल ऑस्टिन को मतरे निम्नलिखित मध्यरु केउ भागटा भारतीय संविधान रो केउ भाग कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अटे संविधान रो अंतरात्मा कहि परिबा. ओके ग्रानविल ऑस्टिन को मतरे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ठीक अछि मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत रहिछि पार्ट 3 एंड 4 हेउछि ग्रानविल ऑस्टिन को मतरे दैट इज द कंसाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. छिला ऑप्शन ए होइछि आपन राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. एन एनुअल इवेंट अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे? अर्थ डे को केबे सेलिब्रेट करा जाय कोंतु? अर्थ डे को केबे सेलिब्रेट करा जाउछि? 22 अप्रैल रे. 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करा जाय. ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? ट्राई करंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हिजबो दैट इज यमुना. ऑप्शन बी यमुना नदी योर राइट आंसर. नेक्स्ट व्हेन डिड द जालियाना वाला बाग मास्कर टेक प्लेस? जालियाना वाला बाग रो जो हत्याकांड होइतिला एहा केउठारे होइतिला? एहा होइतिला अमृतसर रे. अमृतसर रे होइतिला. ठीक अछि जनरल डायर करो जो ओपन फायर करा दितिला. ठीक अछि दैट इज जालियाना वाला बाग हत्याकांड एहा अमृतसर टारे होइतिला. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1. ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर? ट्राई करंतु ओजोन लेयर निम्नलिखित केउ लेयर रे उपस्थित रहउछि? ओजोन लेयर ता सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फियर. ऑप्शन 3 हबो यार राइट आंसर. ओके ओजोन लेयर कोन करछि? ओजोन लेयर जो सन रो जो गोटे हार्मफुल रेडिएशन आछि यूवी रे ताको एब्जॉर्ब करछि. नेक्स्ट व्हाट इज द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर बाबर रूल्ड इंडिया? बाबर कोन करथिले? मुगल शासन को प्रतिष्ठा करथिले भारत रे 1526 टू 30 मसिया पर्यंत. ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर. ठीक अछि इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रे परास्त करथिले. नेक्स्ट वेयर इज द मरियाना ट्रेंच लोकेटेड? मरियाना ट्रेंच आपनकर केउठारे रहिछि? मरियाना ट्रेंच रहिछि आपनकर पैसिफिक ओशियन रे. ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर. पैसिफिक ओशियन मन रखंतु. हु अमंग द फॉलोइंग
has the authority to promulgate ordinance when either of the two house of parliament is not session to enact law. निम्नोक्त मध्यरु किए चाहिए अध्यादेश को जारी करि परिबे? सिंपल प्रश्न, किए चाहिए? राष्ट्रपति. Which article? Article 123 मन रखन. President of India. Next. Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the annual financial statement जाको यूनियन बजेट मध्य को जाय? Annual financial statement of the union government, that is एटा केउ आर्टिकल रे लिखा जाय? आर्टिकल 112 बजेट. ठीक अछि, बट संविधान रे बजेट सेमि किछि नाही. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाबरे याको मेंशन करा जाय छि. Who among the following on the first battle of Tarain in 1191 AD रे ये एथिरे विजय लाभ करथिले? प्रथम बैटल ऑफ तराइन रे पृथ्वीराज चौहान. एथिरे कोन मोहम्मद घोरी परास्त होइथिले, किंतु पुणी थरे यार ठीक 1 वर्ष परे अर्थात 1192 मसिया रे मोहम्मद घोरी पुणी थरे आक्रमण करथिले एवं एथिरे पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तराइन रे पृथ्वीराज चौहान को से परास्त करथिले, किंतु प्रथम रे विजय लाभ करथिले पृथ्वीराज चौहान. नेक्स्ट. Which one of the following is caused due to excess nitrate in drinking water? माने कोन आपनकर ड्रिंकिंग वाटर रे excess nitrate हबो माने दूषित हबो. ओके, देन निम्नक्त मध्यरु केउटा हबो? ब्लू बेबी सिंड्रोम हबो. ठीक है, छोट पिलांगु साधारणतः ब्लू बेबी सिंड्रोम होय. ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट. Which among the following is Asia's first special economic zone? एशिया रो प्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहउछि आपनकर गुजरात. आई थिंक गुजरात हबो. ओके, गुजरात रो ऑप्शन बी हिज राइट आंसर. कांडाला. गुजरात रो कांडाला रहिछि, दैट इज इंडिया रे एशिया रो प्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन थिला. Which was the first सत्याग्रह मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया? प्रथम सत्याग्रह थिला चंपारण आंदोलन. नील चाष को नेकी तीन काठिया व्यवस्था को नेकी. ठीक अछि, राजकुमार शुक्लांकर अनुरोध क्रमे महात्मा गांधी 1917 आई थिंक 1917 मसिया रे बिहार रो चंपारण जिल्ला रे एही सत्याग्रह टी करथिले. ओके, नेक्स्ट जिबा. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following lines separate Arunachal Pradesh from Tibet during British rule समय रे? जो शिमला चुक्ति होइतिला, दैट इज कोन मैकमोहन लाइन. वर्तमान इंडिया चाइना मध्य एही बॉर्डर रे मैकमोहन. रेड क्लिफ ता आपनकर इंडिया पाकिस्तान, देन डुरांड लाइन होछि इंडिया अफगानिस्तान. ओके, एंड एलओसी एलएसी गोटे एपटे माने इंडिया पाकिस्तान जम्मू काश्मीर रे अछि, और अन्यटी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टा इंडिया चाइना सेही लद्दाख रे बजाई थी. लद्दाख और जम्मू काश्मीर हबो. एटा टी आपण कमेंट सेक्शन रे जणाइबे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट? नॉइज पोल्यूशन माने कोन? नॉइज माने साउंड होछि, साउंड रो यूनिट कोन? डेसिबल. ऑप्शन बी होइछ राइट आंसर. हर्ट्ज होछि फ्रीक्वेंसी. ओके, लुमिनस इंटेंसिटी होछि कैंडेला. इलेक्ट्रिक करंट होछि एम्पियर. नेक्स्ट ट्राई करंतु. क्वेश्चन नंबर 23. टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन अर्जेंटीना आर नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अर्जेंटीना रे कहा जाय कोन कहा जाय? पाम्पास. पाम्पास इज योर राइट आंसर. Which among the following organization publish the ease of doing business index? ease of doing business index को निम्नोक्त मध्यरु केउ अनुष्ठान द्वारा प्रकाश करा जाय? ट्राई करंतु. ease of doing business index को निम्नोक्त मध्यरु केउ अनुष्ठान द्वारा प्रकाश करा जाय? वर्ल्ड बैंक इज योर राइट आंसर. वर्ल्ड बैंक इज योर राइट आंसर. River Satluj is one of the tributaries of which of the following river? सतलेज नदी निम्नोक्त मध्यरु केउ नदी रो एक शाखा नदी अटे? सतलेज नदी होछि इंडस नदी रो शाखा नदी. ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर. Who among the following wrote the book हरबिलास? हरबिलास हरबिलास ए पुस्तक टी के लिखिथिले? श्रीनाथ. श्रीनाथ लिखिथिले. जने तेलुगु पोएट थिले, से हरबिलास लिखिथिले. The subject marriage and divorce is mentioned in which of the following list of the 7th schedule of the Indian Constitution? Marriage and divorce आजिबो आपनकर concurrent list, जुग्म तालिका रे आसीबो concurrent list. Who has the authority to determine the salary and the service condition of the Comptroller and Auditor General of India? 148 article. Okay, CAG ये determine करियो? Parliament of India. Option B होइछ राइट आंसर. Parliament of India. Who was the president of Indian National Congress in the Lucknow session of 1916? 1916 मसिया रे भारतीय जातीय कांग्रेस रो लखनऊ सेशन समय रे एहार सभापति के थिले? ऑप्शन डी अंबिका चरण मजुमदार. ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट. When was the first Odia National Conference held in Kottak? कटक रे 1903 मसिया रे प्रथम ओडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस होइथिला. Tropical deciduous forest is also known as कोन हबो कोंतु? Tropical deciduous forest is also known as monsoon forest. Monsoon forest कहजिबो. Where is the geothermal field Puga Valley situated? Puga Valley केउठारे रहिछि?
पुगा वैली कोन रही पुगा वैली रही आपनकर लद्दाख रे ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड नाबार्ड रो हेडक्वार्टर रही फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर the species of plants and animals which are found exclusively in a particular area known as माने कोन कोन से निर्दिष्ट अंचल रे आपण देखिया पई पाइबे तो सही प्रकार रो स्पेसीज प्लांट किबा एनिमल स्पेसीज को कोन कहै जिवो एंडेमिक स्पेसीज ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट ट्राई करंतु खादर सॉइल बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप खादर सॉइल टाइप जेको alluvial soil option C होय जिवो राइट आंसर who among the following founded the Congress Socialist Party in 1934 रे 1934 मसिया रे निम्नलिखित मध्यरु किए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को गठन करथिले ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ऑप्शन ए होय जिवो यार राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 which of the following articles of the Indian Constitution defines money bill विषय रे के आर्टिकल रे वर्णना करा जायछि money bill होछि आपन आर्टिकल 110 मन रखन आर्टिकल 110 money bill next who among the following Mathura dynasty ruler transferred his capital from Bardhamanapura to Sripuram को केउ मथुरा डायनेस्टी रो शासक जे कि तांकर जो राजधानी थिला वर्धमानपुर ठू श्रीपुरम को स्थानांतरण करथिले व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर ऑप्शन डी उमारा मेरू शासक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा केसरी एवं मराठा खबर कागज को किया आरंभ करथिले बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन ए होइज राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ट्राई करंतु पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रो लेखक के अटंती पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया रो लेखक होचंती दादा भाई नारोजी ऑप्शन ए हो राइट आंसर